हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट पार्ट रे आम कंपनी अकाउंट शेयर कैपिटल चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर सारी जो किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते जो इश्यूड एट पार, इश्यूड एट प्रीमियम, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन विषय किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते। आज तार नेक्स्ट पार्ट कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस विषय डिस्कस करवा। वीडियो को एंजॉय देखु, भल लगे लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करूँ और फ्रेंड मान सहित शेयर करूँ। चलतु अब डिस्कस करवा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। Calls in advance. Sometimes a shareholder pays a portion or whole on the unpaid amount on the shares held by him in advance. In such a case, money so received in advance is transferred to calls in advance account. कौन कुछ? Sometimes a shareholder pays a portion or whole on the unpaid amount on the shares held by him in advance. In such a case, money so received in advance is transferred to calls in advance account. कौन ना किसी शेयर होल्डर जोरा के अनपेड थाए। एग्जांपल आमर इंस्टॉलमेंट कौन थिला? एप्लीकेशंस, देन अलॉटमेंट, फास्ट कॉल और फाइनल कॉल। ओके, तो किसी शेयर होल्डर कौन फास्ट कॉल रो पैसा और फाइनल कॉल रो पैसा अलॉटमेंट केस रे दे दैछथि। से जो ताकर अबिका ड्यू हेइनी, तो आमे कोन करछा बिफोर पेमेंट करछे, ता ड्यू डेट हवा पूर्व आमे किसी बिफोर पेमेंट करछे बा शेयर होल्डर पेमेंट कर कंपनी को, तो कंपनी क्या रिसीव कर, तो जो मनीटा एडवांस रिसीव कर गोटे सेपरेट अकाउंट आम खोल, आम कौन करवा से अमाउंट को आम ट्रांसफर करवा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को। से कही ए पोर्शन और होल अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय हिम एडवांस। इन सच ए केस मनी सो रिसीव्ड इन एडवांस इज ट्रांसफर टू कॉल्स इन एडवांस। जी अमाउंट आम एडवांस रिसीव कर से मनीटा आम ट्रांसफर करवा कॉल्स इन एडवांस। सपोज किसी शेयर होल्डर 200 शेयर 200 शेयर कौन फास्ट कॉल पैसा, फाइनल कॉल पैसा अलॉटमेंट टाइम देते। से जो 200 शेयर फास्ट कॉल पैसा, सपोज फास्ट कॉल अच्छे 3 रुपीज और फाइनल कॉल अच्छे 2 रुपीज, तमें 200 इंटू 5 1000 रुपीज कौन करचे आम रिसीव करचे एडवांस। तो सही 1000 रुपीज को आम ट्रांसफर करवा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को। फॉर एग्जांपल आउट बुझीपर, सपोज मो पाखे स्टूडेंट्स अच्छा, स्टूडेंट कौन कर वर्षकर फीस मतलब स्टार्टिंग दे देते, तो मतलब से जो पैसा मिली तो कौन मतलब एडवांस मिली, तो मुझे प्रति मास कौन करी एडजस्ट करके जीवी, तो ताको अबिका से जो मनीटा मुझे रिसीव करची ताको कौन करी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ओके, तो जब मतलब किसी एडवांस मिली कंपनी का एडवांस मिली, तो आज पर रूल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस आज पर टेबल है इज 12% पर एनम। तो आमको जो मनीटा एडवांस मिलती से एडवांस ऊपर आम कौन करवा शेयर होल्डर को 12% इंटरेस्ट पे करिया। तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू गोटे एक्सपेंडिचर्स पर शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू कौन इनकम, बट आम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू देखिए तो आम कौन यहाँ गोटे एक्सपेंडिचर, तो आम के 12% पर एनम आज पर टेबल एफ कौच। ओके, तो ये किसी जर्नल एंट्री डिस्कस करवा क्या शेयर कैपिटल बेस्ड ऑन पूरा जर्नल। ओके, तो जर्नल एंट्री डिस्कस करवा व्हेन कॉल्स इन एडवांस रिसीव। जितने आम कॉल्स इन एडवांस रिसीव कले मैंने मो पाक कौन आसा पैसा आसला, बैंक को आसला बैंक अकाउंट डेबिट, मुझे सेपरेट अकाउंट खोल, तो सेपरेट अकाउंट कौन कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस को कौन करिया क्रेडिट करिया, तो एंट्री कौन पास करिया बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस। जेट एग्जांपल कहली कौन ना फास्ट कॉल रुपीज 3 रुपीज और फाइनल कॉल अच्छी 2 रुपीज। ओके, तो 3 + 2 के 5 रुपीज मुझे कौन कर 1000 शेयर 5 रुपीज तक मुझे एडवांस रिसीव कर इन द केस ऑफ अलॉटमेंट में रिसीव कर, तो से पैसा कौटी आस बैंक आस, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस। अबिका एग्जांपल मत जन आसिक कौन अबिका सपोज भाव यहाँ हूँ कौन फेब्रुआरी मास चलती, अबिका मतलब मार्च मासर पैसा देला, तो मार्च मासर पैसा मतलब फेब्रुआरी दे देती, मैंने मतलब कौन फेब्रुआरी मतलब एडवांस मिली, तो जो फेब्रुआरी मतलब एडवांस मिला मुझे लिखली बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस। तो से मतलब मार्च मासर पैसा दबनी, तो मुझे कौन कर मार्च मास को एडजस्टेड करी। ओके, तो कौन एंट्री लिखी व्हेन कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड, तो ये जो कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करते तो कॉल्स इन एडवांस को कौन करेंगे डेबिट करेंगे, कैंसल हो गला। तो रिलेवेंट कॉल्स जब से फास्ट कॉल थब तो लिखिए 2 शेयर फास्ट कॉल, और जब से फाइनल कॉल थब लिखिए 2 शेयर फाइनल कॉल। रिलेवेंट कॉल्स मैंने जो कॉल आम पैसा रिसीव करछे। ओके, तो जिते मुझे एडवांस रिसीव कली मोर एंट्री था बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस, जिते से कॉल्स इन एडवांस को एडजस्टेड कली तो कौन लिखली कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू रिलेवेंट कॉल्स। ये मोर क्रेडिट करते मोर डेबिट कौन कैंसल होला, तो डायरेक्टली एंट्री कौन पास बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रिलेवेंट कॉल्स। रिलेवेंट कॉल मतलब 2 शेयर फास्ट कॉल लिख पारि, 2 शेयर फाइनल कॉल लिख पारि। ओके, नेक्स्ट अबिका मत जो एडवांस मिलती आज पर रूल मुझे 12% कौन देवी इंटरेस्ट पे करी, तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन एक्सपेंडिचर्स
फॉर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पेड इन कैश तो आम अब कौन करिया पेमेंट करिया राइट तो मु कौन कहली गोटे एक्सपेंडिचर ऑलवेज डेबिट का ऊपर इंटरेस्ट देबी ना एडवांस ऊपर इंटरेस्ट देबी तो एंट्री कौन पास करबी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक कैश गोज आउट फ्रॉम बैंक ओके तो बैंक होची गिवर इटा मोर एक्सपेंडिचर ऑल एक्सपेंडिचर लॉसेस डेबिटेड इन नॉमिनल अकाउंट से तो कौन कहली इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक ओके फोर्थ एंट्री अब ऐसे इंटरेस्ट हमें ट्रांसफर करिया कोटी की पीएल अकाउंट को कहीं कंपनी प्रॉफिट लॉस देखिबा इटा मोर गोटे कोन एक्सपेंडिचर्स तो फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू पीएल अकाउंट तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू पीएल अकाउंट अब या पीएल अकाउंट को ट्रांसफर करिया तो एठी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कौन होता डेबिट होता ट्रांसफर कले कौन हो क्रेडिट हो आम प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखिए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस जेहेतु मोर एटा एक्सपेंडिचर तो प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड बोला प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस बुझी आसला एतला कॉल्स इन एडवांस जदि किछि शेयर होल्डर पोर्शन या होल अमाउंट कौन करथंती अनपेड फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल अमाउंटा आमको अलॉटमेंट दे देथंती मान ड्यू डेट पूर्व दे देथंती बा जेतिक अमाउंट पे करथन से अमाउंट को हम ट्रांसफर करियो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट तो सेटल एंट्री पास करियो फर्स्ट डे रिसीव करली बैंक टू कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट करबी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू रिलेवेंट कॉल्स से एडवांस ऊपर इंटरेस्ट पे करी तार एंट्री होची इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट देन ट्रांसफर करबी इंटरेस्ट को पीएल अकाउंट तो पीएल अकाउंट डेबिटेड बा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस चलंतु कॉल्स इन एडवांस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करिगा आपन बुक रो क्वेश्चन नंबर 9 ए कंपनी issued 25,000 equity share of rupees 10 each payable as follows on application 3 allotment 5 and call 2 okay the time gap between allotment and call is 2 months application for rupees 28,000 share were received excess money received in application was refunded one shareholder paid call money on his 2,000 shares at the time of allotment interest on calls in advance is paid 12% per annum आम इश्यू करते 25,000 शेयर्स जार फेस वैल्यू 10 को डिफरेंट इंस्टॉलमेंट दी एप्लिकेशन 3 अच्छी अलॉटमेंट 5 अच्छी एंड कॉल रुपीज 2 रुपीज अच्छी ओके अलॉटमेंट और कॉल भितर गैप अच्छे 2 मंथ्स जेटू एडवांस आम रिसीव करचे सेटू एडवांस पर आम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करियो जोटा देछि 12% पर annum एप्लिकेशन रिसीव करचे 28,000 माने एटा ओवर सब्सक्राइब हेछि ओके एक्सेस मनी रिसीव इन एप्लिकेशन वाज रिफंडेड जो एक्सेस शेयर आम रिसीव करचे ताको आम रिफंड कर देछे क्लियर तमन हमर इश्यू हेछि 25,000 शेयर्स जार फेस वैल्यू होची 10 ताको डिफरेंट इंस्टॉलमेंट रिसीव होची एप्लिकेशन 3 अलॉटमेंट 5 और फाइनल कॉल 2 3 + 5 8 + 2 10 रुपीज गेला एप्लिकेशन में रिसीव करचे एप्लिकेशन रिसीव करचे 28,000 शेयर्स तमन ओवर सके हमर इश्यू केते थला 25,000 हम रिसीव करले केते 28,000 तमन एक्सेस केते अछि एक्सेस अच्छी 3,000 शेयर्स तो एक्सेस कौन कर रिफंड कर दिए क्लियर तो अभी आम एंट्री फास्ट आम जो एप्लिकेशन एंट्री कर तो आगे 20,000 शेयर को रिसीव करियो देन जाके 3,000 शेयर को रिफंड करिया ओके तो फर्स्ट एंट्री कौन करियो व्हेन एप्लिकेशन मनी रिसीव एंट्री कौन थला बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लिकेशंस बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लिकेशंस बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लिकेशंस ओके केते शेयर रिसीव कली 28,000 शेयर रिसीव कली इनटू एप्लिकेशन मनी इनटू 3 84,000 20,000 इनटू 3 कली बीइंग एप्लिकेशन मनी रिसीव्ड बीइंग एप्लिकेशन मनी रिसीव्ड on 28,000 shares at the rate of 3 each ओके एप्लिकेशन मनी रिसीव कर ली तो एप्लिकेशन मनी कौन बैंक मोर पैसा आसला बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लिकेशंस नेक्स्ट एप्लिकेशन मनी कौन करी ट्रांसफर करी शेयर कैपिटल को ओके तो सेकेंड एंट्री पास करी शेयर एप्लिकेशंस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल ओके शेयर एप्लिकेशन ऊपर जेटिकी क्रेडिट होती सेटिकी डेबिट करी 84,000 बट शेयर कैपिटल को सदाबेले जेटिकी शेयर इश्यू होता है तो 25,000 शेयर इश्यू होती इंटू 3 25,000 इंटू 3 75,000 ओके
अभी से कौन करता एक्सेस जो 3000 शेयर थिला बा एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हमें रिफंड करे छे एक्सेस के 3000 शेयर तो रिफंड एंट्री कौन रखली जेटा हमें रिसीव करछे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन जेटा हमें रिफंड करबा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक काहे कि अपोजिट हो तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होची टू बैंक केते शेयर ना 3000 शेयर 3000 टू 3 9000 ओके 75 plus 9 84 debit to 84 being application money transfer and excess share refunded okay तो फर्स्ट हम एप्लीकेशन में रिसीव कर ली तो एंट्री था बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन सेकंड एंट्री में कौन करूँ एप्लीकेशन में ट्रांसफर करूँ शेयर कैपिटल को तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल और जो एक्सेस 3000 शेयर था हमें ताको रिफंड कर दिया तो तार एंट्री था शेयर एप्लीकेशन टू बैंक ओके नेक्स्ट अभी हम पाखे से 25000 शेयर अच्छी 28000 शेयर में 3000 कौन कले रिफंड कर दीचे एक्सेस टाक हमें रिफंड कर दीचे ओके एक्सेस कौन है रिफंड है तो नेक्स्ट अलॉटमेंट एंट्री पास करिवा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल एक्सेस शेयर के सॉरी इश्यू इतला 25000 शेयर्स अलॉटमेंट मनी होची 5 25000 into 5 1,25,000 अलॉटमेंट रो फर्स्ट अकाउंट है ड्यू एंट्री being allotment due नेक्स्ट अलॉटमेंट कौन कर रिसीव करवा अच्छा क्वेश्चन मेंशन थिला वन शेयर होल्डर पेड द कॉल मनी ऑन हिज 2000 शेयर्स एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट गोटे शेयर होल्डर जे कि 2000 शेयर रो कॉल पैसा से अलॉटमेंट रे दे दी ओके तो जितना में अलॉटमेंट मनी रिसीव करे हमर एंट्री कौन थिला बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट ओके अलॉटमेंट जितनी डेबिट इतला अलॉटमेंट को मैं छठी क्रेडिट कर ली 1,25,000 बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट क्लियर प्लस गोटे शेयर होल्डर 2000 शेयर कॉल पैसा अलॉटमेंट रे रही तो जितना में एडवांस टा रिसीव करो एंट्री कौन था बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस तो बैंक अकाउंट डेबिट अच्छी टू कॉल्स इन एडवांस कितना शेयर ना 2000 शेयर कॉल पैसा कितना 2 रुपीज 2000 to 4000 तमने अलॉटमेंट मनी आसला 1,25,000 और एडवांस आसला 4000 तो टोटल बैंक को हमें डेबिट करिया 1,29,000 being allotment money received with advance for 2000 share call money advance for 2000 share call money ओके नेक्स्ट एंट्री हमें कौन करिवा फाइनल कॉल एंट्री करिया शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल नंबर ऑफ शेयर होची 25,000 कॉल मनी होची 2 रुपीज 25 into 2 50,000 being फाइनल कॉल मनी ड्यू देन हमें कौन रिसीव करिवा रिसीव कले बैंक अकाउंट डेबिटेड एथि जो मु कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करथली जेते मु कॉल मनी रिसीव करी कॉल्स मनी कौन करी एडजस्टेड करी तो एडजस्टेड एंट्री कौन था कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू रिलेवेंट कॉल्स तो मु कॉल्स इन एडवांस को कौन करी डेबिट करी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू रिलेवेंट कॉल्स मतलब शेयर फाइनल कॉल ओके तो मोर शेयर फाइनल कॉल रो अमाउंट ला 58,000 ऑलरेडी मु 4,000 एडवांस रिसीव कर सारी तमन अभी मोर बैंक को केटा आसियो 46,000 मते कॉल रो मनी ड्यू थिला 50,000 जोटे अलॉटमेंट रे मु 2,000 शेयर कॉल्स पैसा मु रिसीव करे तो 2,000 शेयर इनटू कॉल मनी टू 4,000 तो मो पाको 4,000 एडवांस आजितला तो 50,000 और 4,000 एडवांस आजितला तो बैंक को मैं डेबिट करी 46,000 ओके अभी क्या आर इंटरेस्ट आम कैलकुलेट करवा इंटरेस्ट के 12% पर एनम तो आम इंटरेस्ट पे करवा एपटे एंट्री लिख दूची इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक
इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अभी आम केते परसेंट इंटरेस्ट देबो ना 12% को अमाउंट पर ना 4000 आम रिसीव करथिला एडवांस जोटा कि 12% तमने 12/100 केते मास गैप थिला बिटवीन अलॉटमेंट कॉल्स ना 2 मंथ्स 2/12 तो 12 कैंसल 0 कैंसल तो 14 * 2 आंसर इज 80 देखिबे आंसर भी 80 देथिबो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 80 रुपीस तो 80 रुपीस पास करिया being interest paid on calls in advance ओके एंटी पास करिबा तो फर्स्ट कोन थिला आमे 25000 शेयर को आमे कोन करथले इशू करथिले तारु आमे रिसीव करले 28000 एक्सेस शेयर आमे रिसीव करछे 3000 शेयर्स जार फेस वैल्यू थिला 10 रुपीस को डिफरेंट इंस्टॉलमेंट दियाला जोटा कि एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 5 और फाइनल कॉल 2 फर्स्ट आमे कोन करिया 28000 शेयर को रिसीव करले जार एंट्री थिला बैंक टू शेयर एप्लीकेशंस अमाउंट ला 84 देन एप्लीकेशन मनी आमे ट्रांसफर करले शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू बैंक कहीं आमे शेयर कैपिटल को जेटिकी शेयर आमे इश्यू करते हो सेटी शेयर को आमे कौन करो ट्रांसफर करिया तो आमे इश्यू करथले 25000 * 3 75000 आमे कैपिटल को ट्रांसफर करले आउ एक्सेस जो 3000 शेयर थला जार मनी थला 9000 आमे रिफंड कर देले ओके नेक्स्ट सब जाक एंट्री पे कौन करिवा 25000 ऊपर अलॉटमेंट करिया फर्स्ट कॉल करिवा तो अलॉटमेंट फर्स्ट ड्यू एंट्री पास करले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 25 * 5 1,25,000 एरा कोन थला ड्यू एंट्री देन आमे रिसीव करिवा तो रिसीव कर एंट्री कौन था बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट से शेयर अलॉटमेंट कौन को गोटे शेयर होल्डर 2000 शेयर अलॉटमेंट रे कौन को कॉल्स पैसा दे रही तो 2000 टू 4000 मोर एडवांस आ जाइए एडवांस एंट्री कौन था बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस तो मोर बैंक को आसला अलॉटमेंट रो पैसा 1,25,000 प्लस एडवांस 4000 टोटल अमाउंट डेबिट केते 1,29,000 देन मु कॉल कर फाइनल कॉल ड्यू एंट्री पास करी तो शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 25 * 2 50,000 मोर फाइनल कॉल ड्यू अमाउंट ला 50,000 मु ऑलरेडी 4,000 रिसीव कर देछि तामाने मु कॉल इन एडवांस को कोन करबी डेबिट करबी ऊपर मु क्रेडिट करथली एटी मु डेबिट करथली माने एडजस्टेड करली ओके तो मोर बैंक असला 46,000 तो मोर पास फाइनल कॉल रो पैसा मु अलॉटमेंट रिसीव करछि ताबित गैप थिला 2 मंथ्स मतलब 2 मंथ्स रो इंटरेस्ट आमे शेयर होल्डर को पे करबा तो 4,000 कोन थिला एडवांस मनी 12% into 2/12 80 रुपीस तो जर्नल एंट्री कौन पास करी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक कहीं कंपनी पॉइंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑलवेज डेबिट एंड कैश गोज आउट फ्रॉम बैंक तो ये बोले हमें जर्नल एंट्री पास करवा नेक्स्ट अब डिस्कस करवा कॉल्स इन एरियर कौन समटाइम्स सम शेयर होल्डर डू नॉट पे देयर ड्यूज ऑन अलॉटमेंट और ऑन कॉल्स विद इन द फिक्स्ड टाइम द अमाउंट व्हिच इज नॉट पेड बाय द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर्स कौन कहूँ ना समटाइम्स सम शेयर होल्डर डू नॉट पे देयर ड्यूज अलॉटमेंट और ऑन कॉल्स विद इन द फिक्स्ड टाइम द अमाउंट व्हिच इज नॉट पेड बाय द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर्स बेल बेल कौन होती किसी शेयर होल्डर ताकर फिक्स टाइम फिक्स समय भितर से अलॉटमेंट पैसा हो या कॉल्स पैसा दे न था जो जी पैसा मोर ड्यू रही जाए से आम कौन कही था ना कॉल्स इन एरियर्स सपोज मोर 10टा शेयर होल्डर अच्छा 10टा शेयर गोटे शेयर होल्डर मत अलॉटमेंट पैसा कि कॉल्स पैसा देनी से जो गोटे शेयर होल्डर जो अलॉटमेंट और कॉल पैसा देनी जी पैसा मत मिलनी तो सहीटा मोर अकाउंट क्रिएट करी से अकाउंट कौन कॉल्स इन एरियर ओके तो कॉल्स इन एरियर को मुझे कौन करी ट्रांसफर करी तो से कहला समटाइम्स सम शेयर होल्डर डू नॉट पे देयर ड्यूज ऑन अलॉटमेंट और ऑन कॉल्स विद इन अ फिक्स्ड टाइम द अमाउंट व्हिच इज नॉट पेड बाय डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर्स फॉर एग्जांपल एप्लीकेशंस अच्छी अलॉटमेंट अच्छी आउ कॉल अच्छी ओके एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 5 और कॉल पैसा होची 2 रुपीस एप्लीकेशन तो दबा कंपलसरी ओके से कौन करछि 5 रुपीस अलॉटमेंट पैसा देनी कि कॉल रुपीस 2 रुपीस देनी तमाने 7 रुपीस देनी सपोज से 1000 शेयर नेछि तो एप्लीकेशन पैसा दबा कंपलसरी अलॉटमेंट और कॉल्स पैसा से देई नै तमन केते देनी 7 रुपीस देनी तो 1000 शेयर into 7 7000 कौन करबी कॉल्स इन एरिया को कौन करबी डेबिट करबी तो ए डिफॉल्ट को हम कौन करबा कॉल्स इन एरिया रे शो करबा क्लियर तो ठीक से जमी आमको शेयर होल्डर एडवांस देते आम एडवांस कंपनी कौन कर से इंटरेस्ट पे करता तो आम कौन करते इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ओके अबिया से अबिका शेयर होल्डर फिक्स टाइम भितर से पैसा दे पारि ना कि ड्यू रही तो से ड्यू पर आम कौन करवा इंटरेस्ट कैलकुलेट करवा जोटा कि कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू इनकम ओके तो से इंटरेस्ट कैन कैलकुलेट करवा ना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर आज पर टेबल एफ इज 10% पर एनम ओके तो जी तार अमाउंट ड्यू थब और जी मास से ड्यू रही तो आम कौन करवा कैलकुलेट करवा 10% पर एनम रे कैलकुलेट करवा ओके जी आमर ड्यू रही से ड्यू पर आम कैलकुलेट करवा इंटरेस्ट तार किसी जर्नल एंट्री डिस्कस करवा तो जर्नल एंट्री कौन व्हेन कॉल मनी इज इन एरियर जिते आमर ड्यू रहा तो आम केते जानिबा
सपोज मोर अलटमेंट ड्यू रही है अलटमेंट मोर ड्यू एंट्री गोटे रिसीव एंट्री तो मुझे आगे अलटमेंट ड्यू एंट्री देखिए मोर एटिकी शेयर ड्यू अच्छी बोली तापर रिसीव कलापर जना पड़े मोर एटिकी शेयर पैसा मिली ना तो रिसीव केस आम जापर एटिकी शेयर होल्डर मोर पैसा कौन रखते ड्यू रखते तो जिते आम कॉल मनी जो एरियर आम जानवा तो से रिसीव केस एंट्री कौन को लिखा ना कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू रिलेवेंट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू रिलेवेंट कॉल जब अलटमेंट हम टू शेयर अलटमेंट लिखी जब फास्ट कॉल थो टू शेयर फास्ट कॉल लिखी जब फाइनल कॉल थो टू शेयर फाइनल कॉल लिखी ओके तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिलेवेंट कॉल्स अभिया से मत पैसा दे पारानी तो नेक्स्ट अभिया से कौन 2 मंथ्स 3 मंथ्स पर जब पैसा देला तो पूरा अकाउंट को फिर रिसीव करी तो पैसा कौटी आस बैंक को आस तो तार कॉल्स इन एरियर को जो मुझे डेबिट करती अभिया क्रेडिट करके कैंसल करदेवी ओके तो मैं एंट्री कौन लिखी ना बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स ये देख कॉल्स इन डेबिट होता कॉल्स इन क्रेडिट होता तो कौन आस बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रिलेवेंट कॉल्स ओके नेक्स्ट अभी कौन हम से जो ड्यू रहा ड्यू पर आम कौन चार्ज करा इंटरेस्ट चार्ज करा के ना 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स रिसीव्ड इन कैश इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन रिसीव्ड इन कैश अभी आम इंटरेस्ट रिसीव करिया पैसा कौटी आस बैंक आसो तो सीधा मोर गोटे कौन इनकम कंपनी पॉइंट ऑफ इनकम इनकम ऑलवेज क्रेडिट तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स सपोज अभी क्या कहली 1000 शेयर इंटू 7 रुपीज 7000 रुपीज मोर कौन अच्छे ड्यू अच्छी तो 10% जब 2 मंथ्स हो तो 2/12 कैलकुलेशन करेंगे जी इंटरेस्ट हो कैलकुलेट कर शो करें तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स ओके नेक्स्ट ये इंटरेस्ट अभी कौन करेंगे ट्रांसफर करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर कौन करेंगे कौट ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो यहाँ मोर कौन था इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स कौन था क्रेडिट ट्रांसफर कले कौन हो डेबिट हो तो अभी क्या पीएल प्रॉफिट एंड लॉस को कौन करेंगे क्रेडिट कर जेहतु कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू गोटे इनकम तो एंट्री कौन पास कली इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बुझी आसला ये कॉल्स इन एरियर्स जी शेयर होल्डर से अलटमेंट और कॉल पैसा न देती से अमाउंट को आम कौन कहता कॉल्स इन एरियर तो तापर गोटे अकाउंट ओपन करा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट से कॉल्स इन एरियर ऊपर आम कौन करा इंटरेस्ट चार्ज करा के 10% पर एनम और ये जर्नल एंट्री सब पास करवा चलतु अब किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करवा क्वेश्चन नंबर 12 कॉल्स इन एरियर्स Fulera Limited issued 1 lakh equity share of rupees 10 each payable to on applications, 5 on allotment, 3 on first and final call. All the shares are duly subscribed and all money duly received except of first and final call money on 2000 shares. Fulera Limited कौन कर 1 lakh शेयर को इश्यू कर जार फेस वैल्यू अच्छी 10 को से डिफरेंट इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर एप्लिकेशन 2 अलटमेंट अच्छी 5 एंड फास्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज सब पैसा रिसीव कर देछि केवल गोटे शेयर होल्डर 2 कौन फास्ट एंड फाइनल कॉल पैसा 2000 शेयर रिसीव करें तमाम कौन अच्छे ड्यू अच्छी पास जर्नल एंट्रीज ओके नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड 1 लाख शेयर जार फेस वैल्यू अच्छे 10 ताको से डिफरेंट इंस्टॉलमेंट रही एप्लिकेशन 2 अलटमेंट 5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होची 3 रुपीज 2 5 प्लस 7 प्लस 3 10 सब एक शेयर रिसीव होची केवल 2000 शेयर कॉल मनी ड्यू अच्छी ओके तो आज जो हम एंट्री पास करिया फर्स्ट नंबर कौन एप्लिकेशंस ताकि रिसीव करिबा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लिकेशंस बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लिकेशंस ओके नंबर ऑफ शेयर होची 1 लाख जार एप्लिकेशन मनी होची 2 तो 1 लाख इंटू 2 लाख being application money received on 1 lakh share at the rate of 2 each. Next बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लिकेशन नेक्स्ट एंट्री पास करिवा शेयर एप्लिकेशंस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल शेयर एप्लिकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल being application money transfer ओके ये एप्लिकेशन जी क्रेडिट थी से डेबिट कले 2 लाख तो शेयर कैपिटल को भी 2 लाख नेक्स्ट अलटमेंट एंट्री शेयर अलटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल शेयर अलटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल
अलॉटमेंट अच्छी 5 रुपीज तो 1 लाख शेयर 1 लाख इंटू 5 लाख ये भी 5 लाख being allotment money due. नेक्स्ट अलॉटमेंट ड्यू है तापर आम कौन कर अलॉटमेंट मनी रिसीव करिया तो रिसीव एंट्री होची बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट 5 लाख ओके being allotment money received being allotment money received. Next, share first and final call account debited to share capital. Share first and final call account debited to share capital 1 lakh share into first call money kira first and final call 3 rupees 1 lakh into 3 lakh it will be 3 lakh being first and final call money due. Next, receive kariya bank account debited calls in arrear account debited to share first and final call. Share and first and final call. Share and first and final call 3 lakh. कितना शेयर पैसा से दी नथिला all domain due received except of first and final call 2000 shares तो मोर calls in arrear से 2000 to 3 6000 तो 3 lakh plus 6 बोला 2,94,000 being first and final call received except 2000 share ओके तो अबिका आमको इनफॉरमेशन देनी इंटरेस्ट जदि आमको क्वेश्चन इनफॉरमेशन देता तो आम कौन कर कॉल सिनियर्स ऊपर इंटरेस्ट आम कैलकुलेट करते तो इंटरेस्ट आम 10% कैलकुलेट करके आम एंट्री पास करते ओके तो अभी आमको देनी तो जब आम इंटरेस्ट पास करते आम कॉल सिनियर्स ऊपर इंटरेस्ट कलेक्ट करिया तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनियर्स बट ये आमको इनफॉरमेशन देनी अभी देती गोटे बैंक अकाउंट करने तो गोटे बैंक अकाउंट करवा बैंक अकाउंट तो फर्स्ट एंटर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशंस अमाउंट थिला 2 लाख नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट मनी अच्छी 5 लाख नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2,94,000 5 to 7 lakh 9,94,000 एठी भी हम कौन करिया 9,94,000 तो बोले बाय बैलेंस कैरी डाउन 9,94,000 तामाने हमर कैश एट बैंक हमर बैंक बैलेंस रे हमर केटा मन अछि 9,94,000 तो बैंक अकाउंट रे जरा पड़ला जोड सब बैंक रो लेजर करले बैंक अकाउंट जोड सब डेबिट हेतला तब हमें शो करले तब हम पाखरे कैश एट बैंक केटा अछि 9,94,000 ओके तो कंपनी शेयर इश्यू थला 1 लाख तार फेस वैल्यू थला 10 तार डिफरेंट इंस्टॉलमेंट रिसीव करले एप्लीकेशन 2 अलॉटमेंट 5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 तो तार एंट्री पास कले गोटे शेयर होल्डर जे कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2000 शेयर पैसा दे नथला तो 2000 शेयर माने 2000 to 3 6000 तार कॉल चिन एरियर अछि तो कॉल चिन एरियर छ हमर सेरा कोन ड्यू तो कॉल चिन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू रिलेवेंट कॉल्स कोन शेयर और फर्स्ट फाइनल कॉल तो जेतला हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव करिया एंट्री पास करिया बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल चिन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो एई बोले हमें जर्नल एंट्री पास करिया चलंतु अब नेक्स्ट डिस्कस करिबा इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशंस अदर देन कैश इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशंस अदर देन कैश ओके आमे शेयर इश्यू करिबा कैश अगेंस्ट बिकॉज आमे कंपनी रो शेयर आमे कोन करतले जनरल पब्लिक इश्यू करतले ता अगेंस्ट आमे कोन करतले कैश करतले बा ओके अभी आमे कोन करिबा जनरल पब्लिक को दवानी और वेंडर को सपोज कंपनी रो गोटे एसेट दरकार तो
तो अबिका आम कौन करवा एसेट परचेज करवा एगेन्स्ट शेयर्स रे ओके तो अबिका सपोज गोटे दुकानदार तो आम गोटे कौन कले एसेट परचेज कले आम एसेट कंपनी को आसला एगेन्स्ट आम कौन देवा शेयर्स देवा ताकि कहती इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश When any asset is acquired by a company, the payment of purchase price may be made by issue of shares or in cash to the vendor. यदि कंपनी कौन से एसेट दरकार अच्छी और से एसेट परचेस प्राइस को आम कैश दे पारू या जब आम शेयर्स भी दे पारिबा When shares are issued against the purchase price, it is called issue of shares for consideration other than cash. कौन कहले यदि shares are issued against the purchase price, यदि purchase price ऊपर आम कौन करवा से वेंडर को कौन इश्यू करिया शेयर्स देबा साकु आमे कहया कोन कंसिडरेशंस अदर देन कैश अबिका कंपनी सपोज गोटे बिल्डिंग दरकार थला बिल्डिंग रो कॉस्ट होची 5 लाख ओके आमे ताको 1 लाख कैश दे देले आउ जो रेस्ट ऑफ अमाउंट दर सपोज 4 लाख तक से 4 लाख अगेंस्ट आमे कोन करले कंपनी रो शेयर ताको देले ओके त अगेंस्ट आमे कोन करले शेयर इश्यू करले जो 4 लाख अगेंस्ट शेयर इश्यू करले ताको आमे टर्म कहू ना इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश ओके तो बुझी आसला इश्यू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश एसेट हमको दरकार अछि एसेट एगेंस्ट आमे कंपनी शेयर ताको प्रोवाइड करबा तो ताकू आमे कहबा कंसिडरेशन अदर देन कैश से भी सही शेयर कौन कर इश्यू करा जाए सच शेयर्स मे बी इश्यू टू द वेंडर एट पार एट प्रीमियम एट डिस्काउंट बट ऑलरेडी मु कहिचे कंपनी एक्ट 2013 एट ए डिस्काउंट हमरो नाइ ओके फिर भी तुम बुक रे देछि सेटो को मेंशन करछि बा रिकॉर्ड करछि ओके तो आम से वेंडर के जो दुकानदार ओके जहाँ आम आसेटा परचेस कले जहाँ आम बिल्डिंग परचेस कले या मेसीन परचेस कले फर्निचर परचेस कले सी हूँ आम वेंडर ओके दुकानदार क्लीयर तो से वेंडर को आम शेयर केमी इश्यू करवा आम पार इश्यू कर आम प्रीमियम इश्यू कर आम डिस्काउंट इश्यू कर बट आज पर कंपनी एक्ट 2013 डिस्काउंट नॉट अलाउड डिस्काउंट्स नॉट अलाउड ओके डिस्काउंट्स अलाउ करा जाए क्लीयर तो तार किसी जर्नल एंट्री आम डिस्कस करवा जर्नल एंट्री कौन आगे आम कौन करवा एसेट परचेस करवा तो मो पाक एसेट आसो एसेट एगेंस्ट मु शेयर इश्यू करी शेयर पार हो पारे प्रीमियम हो पारे डिस्काउंट एठी जदि पार हो पार एंट्री पास करवा जदि प्रीमियम हो प्रीमियम पास करवा जदि डिस्काउंट हो डिस्काउंट रे पास करवा तीनटा आप फर्स्ट एंट्री ए तीनटा भीतर जेकोसी गोटे एंट्री जदि पार हो पार एंट्री पास करवा प्रीमियम तो प्रीमियम रे डिस्काउंट बट डिस्काउंट्स तुम कंपनी एक्ट 2013 नाइ ओके आम क्या एसेट परचेस करा तो कंपनी कौन आसला एसेट आसला तो एसेट अकाउंट डेबिटेड कहीं एसेट आम इंक्रीज है जिते एसेट इंक्रीज हो एसेट को कौन कर डेबिट करते हो मॉडर्न रूल्स रे तो एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर गिवर किए आमको वेंडर दे वेंडर किए दुकानदार सपोज राम लिमिटेड साम लिमिटेड जी भी आमको देछि तार नाम मेंशन हम जदि मेंशन नाम कि साम न देखो डायरेक्टली वेंडर भी लिखि पारिबो ओके ताले हम एसेट परचेज एंट्री कौन करले ना एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर वैसे ही वेंडर को कौन देबा शेयर्स देबा राइट तो इफ शेयर इश्यूड एट पार जदि शेयर टाको पार इश्यू कर पार कौन इक्वल 10 टका फेस वैल्यू टाको में 10 टका रे इश्यू करछे ओके तो कौन एंट्री लिखिया वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल ओके देखो अभी काइटी वेंडर क्रेडिट ला वेंडर डेबिट कौन रहिला एसेट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल जेतो हमें जेतले एसेट्स हम पाको आसिला और कैपिटल केमिकल शेयर्स थ्रू रे गला सेतो हमें शेयर कैपिटल को क्रेडिट करले एसेट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल ओके नेक्स्ट इफ शेयर इश्यूड एट प्रीमियम जदि हमें प्रीमियम रे शेयर इश्यू करते तो प्रीमियम और कौन गोटे क्रेडिट तो अभी कौन वेंडर को देबा वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम इफ शेयर आर डिस्काउंट तो वेंडर अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑलवेज क्रेडिट डिस्काउंट ऑलवेज डेबिट कारण डिस्काउंट हमरो लॉस ओके अभी क्या हमारा पार थिला प्रीमियम थिला डिस्काउंट थिला ओके तो आम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करिया कोठे केते शेयर थिला सपोज मुटा को 4 लाख रुपीस दवार थिला एठी मोर शेयर वैल्यू अछि 100 रुपीस तो 4 लाख बाय 100 कर देली तो मोर डीरा जीरो कटला तमरे एठी मु 4000 शेयर इश्यू कली राइट जे मोर प्रीमियम थबो तमरो बे शेयर वैल्यू सपोज 10 रुपीस प्रीमियम 110 तो नंबर ऑफ शेयर्स कोनी जो कमी जीवो वे डिस्काउंट अब शेयर वैल्यू कोनी 100 ला 10 टका डिस्काउंट ला 90 वे शेयर नंबर ऑफ शेयर्स मोर बढ़ी जीवो तो सेही नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करबे गोटे फार्मूला यूटिलाइज करबा नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड अमाउंट पेएबल टू वेंडर डिवाइडेड बाय शेयर इश्यू प्राइस अमाउंट पेएबल टू वेंडर वेंडर को जेति टंका दबार अछि शेयर इश्यू प्राइस केते जदि शेयर पार थबो सपोज शेयर फेस वैल्यू अछि 10 तो 4 लाख बाय 100 करिबा जदि प्रीमियम 10% अछि जदि शेयर फेस वैल्यू अछि 100 और 10% प्रीमियम अछि 10 रुपीस तो 110 तो 4 लाख बाय 110 कली जदि डिस्काउंट अछि तो 100 टू 10 माइनस कली त 90 तो अमाउंट पेएबल टू वेंडर होला 4 लाख डिवाइडेड 90 तो एबले हमें नंबर ऑफ शेयर्स मार्क करिया ओके तो कंपनी रो अभी गोटे एसेट दरकार अछि एसेट अगेंस्ट हमें कोन ताकू दबा शेयर्स दबा सेही टर्म टा कोन कह जाय ना इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश
आगे आम आसेट परचेस कले आसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर ये तीन टारू जेको गोटे एंट्री पास करा जोड़ा क्वेश्चन नंबर 8 जब पार रेट पार एंट्री पास करियो प्रीमियम रेट ले प्रीमियम एंट्री पास करो डिस्काउंट रेट ले डिस्काउंट बट आज पर कंपनी एक्ट 2000 डिस्काउंट नॉट अलाउड ऑन शेयर से डिस्काउंट्स अलाउड हुए ना ओके ये बोले हमें जर्नल एंट्री को मन रखिबा चलंतु अदर देन कैश फ्लो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करिबा आपनका बुक रो क्वेश्चन नंबर 15 Gurjap Limited purchased a plant from Santosh for rupees 3,78,000 payable in fully paid up shares rupees 10 each par journal entries. हमको तीनटा का कंडीशन देछि शेयर इश्यूड एट पार शेयर इश्यूड एट 10% डिस्काउंट शेयर इश्यूड एट 20% प्रीमियम ओके हमको नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करियर अछि ओके आगे हम कोन कोन प्लांट परचेस करले काटो परचेस करछे संतोष होते हमर वेंडर ओके तो हम जेतले प्लांट परचेस करिया सेटा गोटे एसेट बा एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर लिख परियो नले प्लांट अकाउंट डेबिटेड टू संतोष लिख परिया ओके तो व्हेन एसेट परचेस फर्स्ट हमें परचेस करछे कौन प्लांट अकाउंट डेबिटेड टू संतोष हमें संतोष टू परचेस कर डायरेक्ट वेंडर भी लिख परियो ना संतोष लिख परियो संतोष होची वेंडर ओके संतोष किए ना वेंडर हमें प्लांट परचेस करछे 3,78,000 तो प्लांट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर बीइंग एसेट परचेस from Santosh ओके आसेट परचेज हमको ए रे कौन दी शेयर इश्यूड एट पार अभी क्या कौन कर संतोष को कौन कर शेयर इश्यू करिया पार रे तो एंट्री कौन क्या वेंडर किए संतोष को ये क्रेडिट कराइला संतोष को डेबिट करवा संतोष अकाउंट डेबिटेड पार इश्यू करा कौन संतोष अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल ओके ये नंबर ऑफ शेयर बाहर करिया इश्यूड एट पार नंबर ऑफ शेयर्स तो फॉर्मूला कौन था ना अमाउंट पेएबल टू वेंडर्स डिवाइडेड इश्यू प्राइस शेयर इश्यू प्राइस ओके हमको वेंडर को केते टका अच्छे 3,78,000 शेयर वैल्यू था 10 रुपीज शेयर वैल्यू था 10 तो इश्यू प्राइस होची 10 तो 00 कटिला नंबर ऑफ शेयर होची 37,800 शेयर्स ओके तो संतोष एटी जेते की क्रेडिट होला संतोष को हमें सेते की डेबिट करिया 3,78,000 क्लियर शेयर कैपिटल केते आसियो ना 37,800 शेयर्स इनटू तार फेस वैल्यू शेयर कैपिटल ऑलवेज फेस वैल्यू रहइबो तो 37,800 टू 10 3,78,000 being 37,800 share issued at 10 each okay देखो B1 में आंसर देते वो शेयर इश्यू 37,800 क्लियर नेक्स्ट बी बिट हम कौन दी शेयर इश्यूड एट 10% डिस्काउंट अभी का डिस्काउंट जेहतु तुम डिस्काउंट्स बुक रे अच्छी से डिस्काउंट भी हम देछि शेयर इश्यूड एट डिस्काउंट हम एंट्री कौन लिखा ना वेंडर की संतोष अकाउंट डेबिटेड discount on issue of share account debited to share capital सदा बोलते वेंडर जी क्रेडिट है सदा वेंडर को हमें से डेबिट करवा कहीं वेंडर हमें परचेस कर 3,78,000 आम 3,78,000 ही पे करवा राइट अभी ये बी केस बाहर करवा इश्यूड डिस्काउंट 10% तमर मोर फेस वैल्यू था 10 डिस्काउंट होची 10% ऑफ 10 माइनस 1 इक्वल टू 9 तो नंबर ऑफ शेयर बाहर करिवे अमाउंट पेएबल टू वेंडर 3,78,000 डिवाइडेड शेयर इश्यू प्राइस 9,36 एक 42,000 शेयर्स केते शेयर 42,000 शेयर जेतिकी शेयर बाहरियो शेयर कैपिटल सेतिकी इनटू तार फेस वैल्यू मल्टीप्लाई करिया 42,000 टू 10 4,20,000 ओके जी शेयर भला डिस्काउंटेड टास अमाउंट मल्टीप्लाई करा डिस्काउंट केते थला 1 रुपीस तो 42,000 into 1 42,000 ओके एठी हमें पारे 37,800 शेयर देले बट एठी डिस्काउंट रे हमको अधिक शेयर दबो कर शेयर वैल्यू बे कमी अछि बिंग 42,000 शेयर इश्यूड ओके नेक्स्ट सी प्रीमियम थर्ड केस जैसे शेयर आर इश्यूड 20% प्रीमियम रेंट को क्या ना वेंडर अकाउंट डेबिटेड तो संतोष अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम ओके संतोष अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम
वेंडर को डेबिट कर 3,78,000 अबिका सी बिट नंबर ऑफ शेयर बाहर करी इश्यूड डिस्काउंट है इश्यूड एट प्रीमियम 20%। ओके तो फेस वैल्यू थे 10 तार अभी कौन करवा प्रीमियम आड करवा 20% ऑफ 10 तो 10 थी 2 रुपीज 12 रुपीज तो नंबर ऑफ शेयर फॉर्मूला कौन अमाउंट पेबल टू वेंडर्स 3,78,000 डिवाइडेड 12। ओके 12 के 12 36 एक 12 के 12 6 12 5 60 31,500 तो जी शेयर वाला 31,500 तार फेस वैल्यू मल्टीप्लाई करवा आउ जी शेयर वाला तार प्रीमियम मल्टीप्लाई करा 31,510 3,15,000 31,500 टू 63,000 being 31,500 share issued at premium share issued। ओके तो आगे आम कौन कले भेंडर टू आम गोटे एसेट परचेस कले जो एंट्री लिखले व्हाट कम्स इन एसेट अकाउंट डेबिटेड टू भेंडर एसेट ना कौन प्लांट अकाउंट डेबिटेड टू भेंडर जो आम भेंडर को शेयर इश्यू कले पार तो एंट्री कौन लिखले भेंडर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल से आम 37,800 शेयर इश्यू कले केम बाहर कले ना अमाउंट पेबल टू भेंडर डिवाइडेड शेयर इश्यू प्राइस। ओके 3,78,000 दबार था और शेयर ऑफ प्राइस था 10 रुपीज ताको पार दीचे 10 रुपीज शेयर 10 रुपीज इश्यू होती 37,800 शेयर को कौन कले इश्यू कले राइट। सेकेंड बिट आम शेयर इश्यू कले डिस्काउंट 10% आम फेस वैल्यू था 10 डिस्काउंट आसला 10% 10 इज 1 तमें आम शेयर इश्यू कले 9 रुपीज तो नंबर ऑफ शेयर भाला अमाउंट पेबल टू भेंडर डिवाइडेड शेयर इश्यू प्राइस 42,000 तो एंट्री कौन लिखली मो डिस्काउंटेड लॉस ऑलवेज डेबिट। ओके संतोष अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल सदा जी नंबर ऑफ शेयर्स बाहर इंटू करिया फेस वैल्यू। ओके तो 42,000 शेयर वाला इंटू 10 कली 4,20,000 आम दबार अच्छे बट आम ये कौन लॉस है ये आम अधिक शेयर इश्यू करछे राइट। प्रीमियम कौन करिया कम शेयर इश्यू करिया संतोष अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम आमर ये नंबर ऑफ शेयर्स बाहर 31,500 कहीं 20% प्रीमियम थी फेस वैल्यू 10 और 20% टू 12 रुपीज डिवाइड कर 31,500 तो शेयर कैपिटल पड़ा 31,500 इंटू 10 3,15,000 और प्रीमियम पड़ा 31,500 इंटू 2 तो ये इश्यू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। आई होप आप वीडियो भल लगे और किसी वैल्यूएबल इनफॉरमेशन प्रोवाइड कर आज ये वीडियो माध्यम आम शेयर कैपिटल कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन एरियर्स अदर देन कैश विषय डिस्कस कले ता रिलेटेड किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कले जदि ए रिलेटेड आपनकर डाउट थबो तो मते कमेंट सेक्शन में पचार परिबे आर नेक्स्ट पार्ट रे आम फोरफीचर ऑफ शेयर एंड रीइश्यू ऑफ फोरफीटेड शेयर रे डिस्कस करिबा। थैंक यू।